Welcome friends, welcome to the lecture series of Basic Electrical Engineering. So in this lecture today we are going to learn about the different types of resistors. So as we know there are two types of resistors existing in the electrical field. So first that is our variable resistor and the second is of our fixed resistor. So let's understand what do we exactly mean by this fixed resistor and variable resistor. So these are my fixed resistors. The first is carbon composite resistor, film resistor and the wire wound resistor, and the last is that is resistance wire. So this all kind of fixed resistors must be represented in this way. This is my circuit symbol. Variable resistor is somewhat these are the types of this variable resistor. First is my rheostat. वेरिएबल रेजिस्टर के 6 टैब्स हैं जो अलग अलग जगह पे हम यूज कर रहे हैं. ये जो थे वो फिक्स्ड रेजिस्टर थे. रियोस्टेट, पोटेंशियोमीटर, थर्मिस्टर, ह्यूमिस्टर, वेरिस्टर एंड फोटो रेजिस्टर. अभी आपको ये लग रहा होगी कि व्हाट डू वी एग्जैक्टली मीन बाय दिस, ये सारे क्या है, हमें कुछ पता नहीं है. सो don't worry, we are just going into this terms and what do we exactly mean by these terms that we will see in this lecture. So let's get to straight to the carbon composite resistor. Okay, so carbon composite resistor क्या है वो हम समझने वाले हैं. तो this is my carbon composite resistor having low inductance. ये जो हमने previously हमने जो सीखा कि इसके कलर कोड के ऊपर से हम डिसाइड कर रहे थे कि ये रेजिस्टर की वैल्यू कितनी है, कितने तक ये रेजिस्टेंस ऑफर करता है. ठीक है, सो दिस इज माय कार्बन कंपोजिट रेजिस्टर and it will be having this much layers. The first is that is carbon mixtures, कार्बन के साथ जो मिक्स किया हुआ मटेरियल होगा जो रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेगा. and these are my connecting leads. ये जो है वो कनेक्टिंग लीड्स हैं जो कनेक्शंस के लिए हम यूज करते हैं. एंड दिस इज माय इंसुलेटिंग मटेरियल. ये जो ऊपर पूरा बना रहता है यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये बाहर की सतह पे जो दिख रहा है वो दैट इज माय इंसुलेटिंग मटेरियल. इंसुलेशन प्रोवाइड करने के लिए जनरली यूज होता है, मतलब कि अंदर के इलेक्ट्रिकल सर्किट और बाहर अगर आप कहीं पे टच कर रहे हो तो आपको शॉक ना लगे इसलिए. ठीक है, द आइडियल फॉर हाई फ्रीक्वेंसी एप्लीकेशंस, ये जो है वो हाई फ्रीक्वेंसी एप्लीकेशंस को अच्छी तरीके से चला सकता है. दैट वी विल सी व्हेनेवर द कार्बन कंपोजिट रेजिस्टर्स विल बी यूजिंग इन दैट एप्लीकेशंस. ठीक है, ऑल्सो इट इज वेरी चीप टू मेक. ये जो है बहुत सस्ता पड़ता है हमें बनाने के लिए. ठीक है, एंड हैव वेरी लार्ज टॉलरेंसेस. ये जो हमने लास्ट में हम जो लिखते थे प्लस और माइनस 5%, 10%, दैट आर माई टॉलरेंसेस. ये जो है बहुत हाई वैल्यू तक टॉलरेंसेस जो है वो प्रोवाइड कर सकता है. The second that is of our film resistor. This is my film resistor. The resistive value of the resistor is controlled by increasing the desired thickness of the deposited film. यहाँ पे जो पूरी फिल्म हमने ऊपर लगाया है जो मटेरियल है उसकी थिकनेस के ऊपर से हम जो है वो इसकी वैल्यू जो है वो बढ़ा सकते हैं या घटा सकते हैं. ठीक है, अगर आप कम रखते हैं तो ये ज्यादा देगा और जो आप अगर ज्यादा रख रहे हो तो ये ज्यादा रेजिस्टेंस जो है वो ऑफर करेगा. ठीक है, the resistance up to the 10 mega ohm can be obtained with this particular manufacturing process. मैन्युफैक्चर जो जिस तरीके से फिल्म रेजिस्टर को कर रहे हैं तो उतने तक में आपको 10 मेगा ओम तक की वैल्यू का जो है वो रेजिस्टेंस ऑफर करके देगा. एंड these are the resistors which are having the less tolerances. What that is my 1% और लेस, 1% से भी कम जो है वो टॉलरेंस ये ऑफर कर सकता है. ठीक है, अगर मिनिमम वैल्यू में अगर टॉलरेंसेस चाहिए देन यू कैन गो फॉर द फिल्म रेजिस्टर. वायर बाउंड रेजिस्टर क्या है? This is called as the wire wound resistor. This material would be of the metal alloy wire onto an insulating ceramic former. ये जो है वो पूरा सिरामिक का है और उसके अंदर जो है वो हमारा मेटल वायर अंदर रहता है. ठीक है, तो ये मेटल वायर जो है वो उसको हमने हेलिक्स फॉर्म में अंदर रखा हुआ होता है, मतलब पूरा जो है वो ऐसे ट्विस्टिंग तरीके से जो है वो पूरा अंदर रहता है. That will offer a particular value of resistance also. Available in very low ohmic and high precision values. ज्यादा प्रिसिशन वैल्यूज और लो ओहमिक वैल्यूज के लिए जो है ये फेमस है. ठीक है, सो दिस आर माय वायर बाउंड रेजिस्टर्स. दिस वन इज आल्सो ऑफ द फिक्स्ड रेजिस्टर टाइप ऑफ थिंग. ओके, सो that is all for the fixed resistor. Now we are going into the variable resistors. Okay, so whenever we talk about the variable resistor, the first comes that is of the name of rheostat, and rheostat is nothing but a adjustable resistor used in applications that require adjustment of current or varying of resistance in an electrical circuit. ये जो यहाँ पे आप देख रहे हो कि ये एक पिक्चर है that defines my rheostat. If we want to increase the value of the resistance, then we need to slide this knob towards the right or left. अगर आपने यहाँ पे
आपको अगर ज्यादा चाहिए रेजिस्टेंस की वैल्यू, देन यू शुड मूव दिस स्लाइडर टुवर्ड्स लेफ्ट टू राइट, एंड व्हेनेवर वी वांट लेस वैल्यूज देन वी नीड टू मूव दिस नॉब टुवर्ड्स राइट टू लेफ्ट। ओके, इसकी जो कंस्ट्रक्शन है वो कुछ इस तरीके से है कि इसके ऊपर जो है वो रेजिस्टिव वायर लगाया गया है, जो ऐसा मटेरियल यूज करते हैं जो कंप्लीटली ज्यादा रेजिस्टेंस ऑफर कर सके। तो यहाँ पे ये पूरा वायर उसके ऊपर वाउंड होता है, और ये स्लाइडर की मतलब मदद से हम जो है वो कोई पर्टिकुलर टर्म्स जो है वो सर्किट के अंदर देते हैं, ताकि एक पर्टिकुलर फिक्स्ड वैल्यू का रेजिस्टेंस जो है वो हमें ऑफर हो सके। और इन दी सेंस अगर आगे जाके ड्यूरिंग दी ऑपरेशन इफ वी वांट टू इंक्रीज दिस रेजिस्टेंस, अगर हमें रेजिस्टेंस बढ़ाना है देन वी नीड टू मूव दिस स्लाइडर, हमको ये स्लाइडर को लेफ्ट टू राइट मूव करना है, और अगर घटाना है देन वी शुड मूव दिस स्लाइडर फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। ओके, राइट टू लेफ्ट हमें मूव करना है अगर घटाना है तो। सो दिस वे द रियोस्टेट विल वर्क। Special type of rheostat is the potentiometer, that is our next topic. See over here, this is our circuit symbol for the rheostat. Clear? The next is, that is my potentiometer. Okay, potentiometer कुछ इस तरीके से यहाँ पे देख सकते हो आप लोग। There are three terminals. Two terminals are for the positive and the negative values, and the third one is ground. Okay, a potentiometer is a spot in electronics technology and is a three-terminal resistor with a sliding contact that forms an adjustable voltage divider. ये जो है वो पूरे नॉब को अगर आप मूव करोगे तो उसी तरीके से ये रेजिस्टेंस बढ़ाएगा या फिर घटाएगा। ठीक है, इट्स अ काइंड ऑफ रेगुलेटर। अगर रेगुलेटर में हमें अगर फैन को फास्ट करना है देन वी शुड मूव दिस पर्टिकुलर इन दी सर्कुलर मोशन, द नॉब विल बी मूव्ड इन दी सर्कुलर मोशन, and for this particular resistance increasing, we need to move this towards the any one side, and if we want to lower the resistance then we should move this contact into the opposite side of the first one. Okay, so this way it can increase the resistance and decrease the resistance. ये जो नॉब है वो कुछ हमारे वोल्टेज रेगुलेटर जो फैन के लिए हम जो यूज करते हैं उसी तरह है, जिसे हमें पंखा फास्ट करना है तो उसे हम रेगुलेटर को हम ज्यादा पॉइंट्स पे लेके जाएंगे, और अगर हमें घटाना है तो हम कम पॉइंट्स पे लेके जाएंगे। सो इट विल बी काइंड ऑफ क्लॉकवाइज एंड इनटू द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अगर हम क्लॉकवाइज मूव कर रहे हैं तो क्या होगा, इट विल ऑफर मोर रेजिस्टेंस, और अगर हम एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहे हैं देन इट विल ऑफर लेस रेजिस्टेंस। सो दिस वे द पोटेंशियोमीटर विल वर्क. Potentiometers are commonly used to control electrical devices such as volume controls and joysticks. ये जो है वॉल्यूम कंट्रोल और जॉयस्टिक्स के लिए हम जो यूज करते हैं, these are my ultimately the potentiometers only. Okay, the next one is thermistor. Okay, now what do we exactly mean by the thermistor? Thermistor is a type of resistor whose resistance varies significantly with temperature. ये जो है वो टेम्परेचर के साथ जो है वो अगर टेम्परेचर जो हाई जा रहा है then it will offer more resistance, और अगर टेम्परेचर मेरा लो जा रहा है then it will offer less resistance. Okay, so this way the thermistor will work. ये जो डिपेंड करेगा कि अगर मेरा टेम्परेचर हाई गया तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा ही, ये चीजें उसके मेटल के कोएफिशिएंट पे डिपेंड करती है, दैट इज अवर टेम्परेचर कोएफिशिएंट. अगर पॉजिटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट है देन इट विल ऑफर मोर नंबर ऑफ रेजिस्टेंस एंड फॉर द पॉजिटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट मेटर. और अगर नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट है तो विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर द रेजिस्टेंस विल बी डिक्रीज्ड. रेजिस्टेंस क्या होगा, टेम्परेचर इंक्रीज होने के साथ ही रेजिस्टेंस कम हो जाएगा. सो दैट इज माय थर्मिस्टर. ओके, सो दिस वे द थर्मिस्टर विल वर्क. नाउ आफ्टर ह्यूमिस्टर, that is our humidity sensing device. It will also offer some resistance but with the humidity. Okay, अगर मेरी ह्यूमिडिटी जो है वो ज्यादा हो रही है then it will offer the resistance, और अगर मेरी ह्यूमिडिटी कम हो रही है then it will offer somewhat less resistance. So by the change in the humidity it will apply the change in the resistance to the particular output terminals. Okay, तो हमारा जो ह्यूमिस्टर है वो कैसे वर्क करेगा, ह्यूमिडिटी के साथ वो वेरी होगा. टेम्परेचर के साथ जैसे कैसे हो रहा था, जैसे उसमें पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट और नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट था, तो इसके अंदर अगर ह्यूमिडिटी इंक्रीज हो रही है देन इट विल ऑफर दी मोर नंबर ऑफ रेजिस्टेंस, एंड इट विल इफ इट विल बी लेस देन इट विल ऑफर दी लेस रेजिस्टेंस वैल्यूज. The next one is my varistor. Okay, varistor क्या है? So this way it can be look alike. This is the varistor. Varistor is nothing but the voltage dependent resistor. अगर मेरा वोल्टेज बढ़ रहा है या घट रहा है तो उसके ऊपर से जो है ये रेजिस्टेंस जो है वो ऑफर करके देगा. कंडक्ट सिग्निफिकेंटली इंक्रीज इन दी करंट व्हेन वोल्टेज इज एक्सेसिव. जब वोल्टेज ज्यादा रहेगा तो ये क्या करेगा, करंट भी बढ़ जाएगा, और अगर मेरा वोल्टेज कम रहेगा देन करंट विल आल्सो बी लेसर अमाउंट. ओके, सो दिस वे द वेरिस्टर विल आल्सो वर्क.
The next one, that is my photo transistor. Now photo comes to into the picture, then it is directly related to the light. Okay, the light dependent resistor, that can be also called it as, and the photoresistor is having the light dependent resistor or exhibits photoconductivity. क्या करेगा, जब हमारा लाइट इंटेंसिटी अगर ज्यादा हो रहा है उसके ऊपर, देन इट विल ऑफर सम मोर नंबर ऑफ रेजिस्टेंस, और इट विल बी लाइक दिस वे, इट विल डिक्रीज द रेजिस्टेंस विद द इंक्रीज इन लाइट इंटेंसिटी. आई जस्ट वांट टू से दैट इफ यू आर गोइंग फॉर दिस LDR, then LDR will be working in this way, that if you increase the light intensity, then it will offer the less number of resistance, and if you increase the light intensity, then it will be increasing the resistance. But if you lower the light intensity, then it will offer more number of resistance. So this way the phototransistor will work. As you can see, there's phototransistor in many consumer items such as street lights, clock radios, alarm devices, etc. So this way the photoresistor will work. As you can see, this kind of photoresistor transistor will be there, and photoresistor, or we can see the transistor is also there, and resistor is also there. So this way the phototransistor, or we can say the photoresistor, will work. The next one is my Ohm's law. Ohm's law is nothing but the invention by the Georg Simon Ohm, by a German physicist. He was professor at Munich, and Ohm's law is given by him. So what do we exactly mean by this Ohm's law? आपने सभी ने Ohm's law पढ़ा है, क्या define कर रहा है? That we are going to understand right now. The ratio of the potential difference. Now potential difference, we know that the whatever the voltage is between the two terminals, that is considered as the potential difference between any 2 points of a conductor to the current flowing between them is constant, provided the physical conditions, for example temperature etc. do not change. Okay, अभी मैं आपको समझाता हूँ क्या है. देखिए वोल्टेज जो है, जो भी कंडक्टर हम यूज कर रहे हैं उसके दो टर्मिनल्स के बीच में जो वोल्टेज रहेगा, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस रहेगा, दैट विल बी कांस्टेंट. ओके, इररिस्पेक्टिव ऑफ द टेम्परेचर या कोई भी जो एटमॉस्फेरिक कंडीशंस है उसके कंडीशन पे अगर मेरा रेजिस्टेंस जो है वो बढ़ रहा है घट रहा है ऐसा नहीं होगा. इट विल बी कांस्टेंट एंड प्रोवाइडेड बाय द फिजिकल कंडीशंस, दैट इज डिफाइंड इन दिस वे, दैट इज ऑफ वोल्टेज डिवाइडेड बाय द करंट इक्वल्स टू कांस्टेंट. ओके, रेशियो ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एनी 2 पॉइंट्स, कोई भी 2 पॉइंट्स के बीच में जो भी हमारा रेशियो पोटेंशियल डिफरेंस है, इट विल बी गिविंग यू द कांस्टेंट करंट whenever we can see that, and we can say the resistance will be constant. बहुत अलग अलग तरीके से हम ये चीज को हम डिनोट कर सकते हैं, जैसे कि इन अदर वर्ड्स V by I is equals to constant. वोल्टेज और करंट जो है वो दोनों क्या रहेंगे, कांस्टेंट रहेंगे. और वी कैन से द वोल्टेज डिवाइडेड बाय करंट इज इक्वल्स टू R, दैट इज माय रेजिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स कंसीडर्ड. जो भी हमने 2 पॉइंट्स लिए हैं उसके दोनों के बीच में जो रेजिस्टेंस ऑफर करेगा वो. This law is applicable to DC and AC, both the conditions. दोनों के लिए applicable है, DC and as well as for the AC. The other points are, if the voltage is measured in volts and the current in amperes, then resistance is given in the ohms. Okay, resistance का जो है वो unit वो क्या रहेगा, ohms. That is from the scientist that we have seen, Georg Simon Ohm. Okay, the German physicist. So उन्होंने हमें ये ohms यूनिट जो है वो प्रोवाइड किया है फॉर दी रेजिस्टेंस. उसके इन्वेंशन के ऊपर से हमने जो रेजिस्टेंस मेजर करते हैं उसे हम ohms में मेजर करते हैं. सो दैट इज द आइडिया. Now for the calculation of the various forms should be remembered in this way. The current is equals to voltage divided by the resistance, and hence as you can see that current is equals to potential difference divided by the resistance. यही हमने यहाँ पे लिखा है. For the voltage is equals to I into R. The potential difference is equals to current multiplied by the resistance. इसके ऊपर से हम voltage भी measure कर सकते हैं. And the thing that is main, that is already defined by the German physicist Georg Simon Ohm, that is my resistance is equals to V divided by the I. Resistance is equals to potential difference divided by the current. So this way the Ohm's law can be defined. यहाँ पे हमने Ohm's law इसलिए पढ़ा क्योंकि आगे जाके हम जब भी कनेक्शंस रेजिस्टर्स के अभी पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो वो चीजें कहाँ से आई है तो उसके लिए आपको पता होना चाहिए. तो ओम्स लॉ के ऊपर से हम जो है वो पूरा डेरिवेशन करने वाले हैं. सो दैट इज द मेन कंसेप्ट एंड दैट्स हाउ द ओम्स लॉ कैन बी डिफाइंड. आई होप ऑल ऑफ यू गेट अ क्लियर आइडिया अबाउट दिस रेजिस्टर टर्म्स and the Ohm's law. Okay,
So if you learned from this video, then you should like and share the video, and to watch more this kind of videos, you should definitely subscribe to my channel. Thank you for watching the video.